Okay, so today we will discuss about the structures that are there in SAP HCM. Now, what is the structure? Structure is nothing but these are those sort of things that you generally have to create a layout for that. Okay, there are three structures, but it can again be elaborated to five structures. Payroll and time can be counted as different type of structures, and it can be elaborated to five structures. But generally in SAP, there are three structures which they mainly ask in interview, or which are also involved at the time of implementation. Okay, so first one is enterprise structure. Enterprise structure. Now let's see what is the enterprise structure is all about. In enterprise structure, the most topmost entity of an enterprise structure is generally known as the client. Client is something that again, if I go over here, if I see this part, so you can see that here I have logged in myself to a particular client. Again, let me go back, log off. So I've logged myself into one particular client, which is 001. So client is the uppermost entity in the enterprise structure. Client is the uppermost entity in the enterprise structure. Okay. Within client, we generally have different sorts of company codes. This is the basic fundamental that is generally being asked in interview, and you have to have an idea about, okay, what is enterprise structure, okay, what is organizational structure, okay, what is payroll structure, okay, what is employee structure. Before implementing the system, it's very important to understand these three or four structures, or these three or four aspects of thing before you go and do any kind of a configuration. Like I've explained generally how the documentation and everything works out when it comes to the ASAP process, right? Here, this one, the project kickoff, type of implementation like rollout, and again, like here I've explained what is the project preparation, what is the business blueprint, what is the realization, what is the final preparation, and what is the other aspects of it. So generally when we do the project preparations or while collecting the blueprints, so जब भी हम blueprint collect करते हैं, so in the blueprint itself जितनी भी चीज़ें होती हैं that help us define the structures first. कि ठीक है, मेरे पास में locations आ गई, मेरे पास में client details आ गई, कि ठीक है, मेरे पास में पता पड़ गया कि departments कितने हैं उस particular company के. So those things are generally defined in enterprise structure. Okay, so company code is the next part. Company code. So you don't have to worry. We will go with the definition of again, like this company code can be. Let's write it in this way. Client, company code. Then we have personal area. Then we have personal sub area. Okay, so this client can generally be like in the case of the current scenario, like in the case of this current system that I'm using. So here in this case, let's say the client is 001. Okay, so within this client, I will be having a multiple number of one second.
CL, let's say 001. So within this client, I can have the different company codes. Company codes is again nothing. It's just a four-digit code that define the country grouping segregations. अभी country grouping segregation मतलब क्या कि ठीक है मेरा client एक headquarter location हो गया एक headquarter location के हिसाब से मैंने company code के अंदर का कंट्री स्पेसिफिक सेग्रीगेशन कर दिया दैट ओके मेरी ये कंपनी जो है ये इंडिया में भी है ब्राज़ील में भी है यहाँ भी है वहाँ भी है इफ इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड दैट देन देर आर सम सिनेरियोज जिसके अंदर क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कंपनी कोड को असाइन होता है okay so generally company code CC let's name it it can be things like again a four digit code like maybe 0001 or like let's say maybe 1000 or maybe 1001 or maybe 1002 or so and so on and so forth much like that okay 1003 things like that and then you have the personal area. Personal area is nothing but the different geographical locations within that company code. अभी देखो geographical locations मतलब क्या हुआ कि ठीक है अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे ठीक है so it could be let's say 1000 is representing India or let's say we write our company code in such a way that let's say if it is the ABC company the company name is ABC International. Internationals. Okay, so in the company code, I'm denoting it through this way. Let's say ABIN is for India, and let's say ABAU is for Australia, and let's say ABBZ is for Brazil, and let's say AB can take FR, let's say for France. Okay, so I'm saying that my company is generally based out in these four geolocations, country specific wise, country specific segregations, country specific segregations. Then it comes to the personal area that okay if it is in India then where so like I have to generally do it in this way like if I'm saying it is in India then in India how many different personal areas let's say we are talking only about India in this case so in India the different personal areas are much like let's say ABMH okay which is for Maharashtra let's say ABK let's say it's for Karnataka let's say ABGJ it's for Gujarat so here I'm creating a three different categories out of it from here then again these different personal areas that I'm having these personal areas can also be subdivided into different departments not departments are nothing but generally known as the personal sub area so here I can say that ABMH have let's say the four different departments in India I mean everything is we are talking about is under this company code only so ABMH is having the four different departments in India what are those departments let's say 000A which is for human resource 000B is for let's say finance 000C let's say it's for production department and let's say 000D let's say this is the sales department we have okay so much like that so similarly I can do the categorization for ABK as well
So let's say again, I can, if I want, I can take the similar name cases over here because see again these names of personal sub area that I'm creating, ये जो भी मैं नाम यहाँ पे पर्सनल सब एरिया के क्रिएट कर रहा हूँ ये ए बी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है बिकॉज सी अगेन यहाँ पे मैंने जो ये पर्सनल सब एरिया डिफाइन करूंगा ये ए बी एम एच के केस के अंदर है और अगर मैं चाहूँ तो नेमिंग क्लेचर सेम भी ले सकता हूँ दैट इज 000A 000B 000C 000D so it will not be much of an issue over here बट लेट्स से मैं कुछ यहाँ पे अलग से डिफाइन करना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटका में जो मेरी एबीसी कॉर्पोरेशन कंपनी एबीसी इंटरनेशनल कंपनी है कर्नाटका में दे हैव ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस apart from that they don't have production department or sales department over there but they have a research department over there just as an example I'm doing some bifurcation over here जरूरी नहीं होता है कि हर एक कंपनी का डिपार्टमेंट लाइक पर्टिकुलरली जिस भी स्टेट के अंदर वो कंपनी हो उसमें हो बट like for an example bank like let's say Bank of Maharashtra so Bank of Maharashtra is actually available in many states many cities but उसका जो headquarter location है let's say that will always be Pune or Mumbai so it's much like that okay so I'm saying that okay ABK will have only 3% sub areas similarly I can do the categorization for ABGJ as well which is AB Internationals Gujarat so let's say अगर मैं यहाँ पे नेमिंग क्लेचर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ क्या yes I can do that अपन यहाँ पे नेमिंग क्लेचर चेंज कर सकते हैं we can keep the nomenclature let's say in this case is 000E and then we can also do the 000F here I am saying that there is a quality department एक example मैं दे रहा हूँ यहाँ पे there is a quality department and then there is a another research department over here एक example के तौर पे फिर से मैं यहाँ पे एक another research department create कर or if you want to use so you can want if you want you can create n number of such examples over here okay so that is typically or that is basically known as the enterprise structure of a company enterprise structure के लिए first you have to have a client जिस client के अंदर आप अलग अलग company codes को configure करते हो in those company codes then you create different personal areas कि ठीक है अगर इंडिया लोकेशन है इंडिया उसकी जियो लोकेशन है तो इंडिया जियो लोकेशन में कहाँ कहाँ पे दैट इज इन महाराष्ट्र दैट इज इन कर्नाटका दैट इज इन गुजरात नाउ you have AB Maharashtra okay now I'm taking this particular personal area as an example so now you have AB Maharashtra so AB Maharashtra के अंदर कितने personal sub areas हैं 000A 000B 000C 000D सो लाइक कौन कौन से जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया फाइनेंस हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया सेल्स डिपार्टमेंट हो गया इफ आई वांट आई कैन क्रिएट द अदर सब डिपार्टमेंट्स एज वेल लाइक ओवर हियर ओके सो all of those things generally यहाँ पे क्या होता है कि whenever I also create a company code जब भी मैं company code create करता हूँ so company code has to be created under a specific controlling area अब आप पूछोगे कंट्रोलिंग एरिया क्या है सी कंट्रोलिंग एरिया इज नथिंग इट्स जस्ट अ फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी ठीक है कि फाइनेंस टीम को मालूम होना चाहिए कि कितनी एंड देन अगेन दिस कंट्रोलिंग एरिया कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अच्छा अब देखो इसके अंदर एक चीज क्या है जब भी मैं कंपनी कोड क्रिएट कर रहा हूं तो अगर मैं सी ए बी आई एन क्रिएट कर रहा हूं तो ए बी आई एन के अंदर जितनी भी मैं ये चीजें क्रिएट करूंगा इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आएंगे सबकी सैलरी मैं आईएनआर में दूंगा इंडियन रुपीस में अच्छा यहाँ पे अगर मैं ए बी ए यू के अंदर पर्सनल एरिया और सब एरिया क्रिएट करूंगा तो वहां मैं सबकी सैलरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में दूंगा सिमिलरली अगर ए बी बी जेड या फिर ए बी एफ आर के लिए मैं क्रिएट करता हूँ तो मैं जितने भी उसके अंदर पर्सनल एरिया सब एरिया के अंदर जो भी एम्प्लॉयज आएंगे उनकी सैलरी मैं उनके लोकल करेंसी टर्म्स में दूंगा तो ये सारा के सारा लोकल करेंसी टर्म्स कहाँ से डिफाइन होता है जब तक मैं मेरे कंपनी कोड को कंट्रोलिंग एरिया को असाइन नहीं करता हूं ओके कुछ क्वेश्चन इस चीज को लेके कि कंट्रोलिंग एरिया मुझे क्यों चाहिए not getting. Can you please explain it again? which part you are not getting have you from
when Controlling area. controlling area you are not getting. Yes. अच्छा, ये पार्ट समझ में आ गया, हाँ. राइट? अच्छा, ये वाला पार्ट ए Right. बी एम एच ए बी के ए बी बी जे ए बी जी जे ये किसके अंदर आ रहा है? India. इंडिया के अंदर आ रहा है, करेक्ट. ए बी तो मतलब मैं मान रहा हूँ कि ए बी आई एन जो मेरा है वो क्या है? इंडिया स्पेसिफिक कंपनी कोड, राइट? और ए बी ए यू क्या है? ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक. एबीसी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया. एबीसी इंटरनेशनल इज अ जेनरिक टर्म दैट आई एम गिविंग टू अ कंपनी, एक एग्जांपल के तौर पे, टू ऑस्ट्रेलिया. एंड दिस वन इज व्हाट? एबीसी इंटरनेशनल इंडिया. Okay. Similarly, what are the other things that I'm having over here? What are the other different company codes? We have ABBZ, that is ABC International Brazil. ABC International Brazil. And what is the other thing that I'm having? ABFR, which is ABC International France. ओके, अभी देखो, नाउ लेट मी शो यू डायरेक्टली ऑनटू द सिस्टम की एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है. आई एम टेकिंग एन एम्प्लॉई फॉर अ रेफरेंस हियर इन दिस केस. तो अब जैसे कि ये एम्प्लॉई है मेरे पास में, सो देखो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, दिस इज फॉर अ डिफरेंट क्लास विच आई एम ऑलरेडी टेकिंग. इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मैंने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, आई हैव टेकन लेट्स से टाटा मोटर्स एज एन एग्जांपल. तो उधर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि दिस सीईओ कोड इज नथिंग बट द कंपनी कोड. कंपनी कोड जैसे यहाँ पे अपन एबीआईएन कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया था टीटीआईएन कि टाटा मोटर्स इंडिया, एक एग्जांपल के तौर पे. तो अब देखो, मैं यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो एम्प्लॉय है ये टाटा मोटर्स इंडिया के अंदर काम करता है, उसके अंदर ये महाराष्ट्र के अंदर काम करता है, उसके अंदर ये एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है. इतना पार्ट समझ में आया? Yes. ओके. तो अब जैसे ये वाला जो एम्प्लॉय है, अब अगर मैं इसकी सैलरी रन करूंगा, अब देखो ये सब चीजें तो ये इंडिया में ही कर रहा है, तो अगर मैं अब इसकी सैलरी रन करूंगा, राइट, पेरोल रन करूंगा, तो मेरे को इसको इंडियन रुपीस में पैसे देने पड़ेंगे कि मुझे यूएस डॉलर में देने होंगे या कोई और करेंसी में देने होंगे? Indian rupees. इंडियन रुपीस में, राइट? सो वो यहाँ पे यही बात आ रही है कि जो ये सेग्रीगेशन मुझे करना है कि भाई सिस्टम को कैसे पता पड़ेगा कि ए बी आई एन इंडिया स्पेसिफिक है, ए बी ए यू ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक है, ए बी बी जेड ब्राजील स्पेसिफिक है, ए बी एफ आर फ्रांस स्पेसिफिक है. और जितने भी उसके अंदर एम्प्लॉयज आएंगे, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में मुझे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा. तो जितना भी वो स्ट्रक्चर आएगा, तो वो किस करेंसी में उनको पेमेंट मुझे करनी है या उनको किस करेंसी में मुझे पेरोल प्रोवाइड करना है. पेरोल इज जस्ट द वन एस्पेक्ट, देयर इज अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, लाइक कंट्री लॉज एंड एवरीथिंग. कैसे पता पड़ेगा सिस्टम को? तो सिस्टम को ऐसे पता पड़ेगा कि एबीआईएन जो है कंट्रोलिंग एरिया, क्या करूंगा मैं कि एक इंडिया स्पेसिफिक कंट्रोलिंग एरिया में बना दूंगा. उसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये आईएनआर के लिए है, वो कंट्रोलिंग एरिया में इस इंडिया वाले को असाइन कर दूंगा. सिमिलरली मैं एक ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक कंट्रोलिंग एरिया बना दूंगा और मैं वहां पे डिफाइन कर दूंगा कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होनी है वो सब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में होगी और उसको मैं एबीएयू को असाइन कर दूंगा. और सिमिलरली मैं ब्राज़ील और फ्रांस के लिए भी वैसे करूंगा और उसको मैं वो जो भी कंट्रोलिंग एरिया बनेगा उसको मैं ब्राज़ील और फ्रांस को असाइन कर दूंगा, ताकि स्ट्रक्चरली जितने भी एम्प्लॉयज मैं हर एक कंपनी कोड के अंदर हायर करूं, उनको सैलरी उनके लोकल टर्म्स में ही मिले. नाउ यू गेट इट? Yes. थोड़ा थ्योरी इसका ट्रिकी है, बट
like once you start practicing it, it'll be very much clear to you. But मैं इसका एक layout show करता हूँ generally कि enterprise structure कैसे लगता है. I know this is little fuzzy up, but let me show a layout of this particular one. एक मैं दूसरा एग्जांपल लेके आ रहा हूँ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को लेके ही. लेट्स सी हाउ जनरली द आइडियल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. लेट्स से अगर एक कोई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो. So like in this case we have this the enterprise structure for this company. Is it visible? Yes. ओके. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल बाइक ग्रुप. क्या नाम है? ग्लोबल बाइक ग्रुप. ठीक है. अब उस कंपनी, अब जो वो मेन, दिस इज द मेन कंपनी, जैसे अपन बोलते हैं एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, या फिर जैसे कि अपन बात करते हैं टाटा मोटर्स. अब मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है कि टाटा मोटर्स कौन सी वाली, ब्राजील वाली या फिर इंडिया में भी है, साउथ अमेरिकन मार्केट्स के अंदर भी है, विच वन वी हैव नॉट डिफाइंड इट येट, राइट. सो आई एम सेइंग the global group, matlab the incorporated, the main hierarchy, the first uppermost. So uppermost hierarchy of any company is generally known as the client. SAP के अंदर this is like ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट हो गया. एंड इसी डॉक्यूमेंट को हम SAP में कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं. So global bike group is nothing but it's the main hierarchy company name which is known as client. अब उसी कंपनी को हमने बता दिया कि इनके जो ऑपरेशंस हैं वो दो जगह हैं. मतलब क्या, ये गाड़ी बनाते हैं और दो जगह सेल करते हैं. एक है यूएस में और एक है जर्मनी में. ओके. सो दिस वी सेड दैट दिस इज द कंपनी कोड. दिस इज नथिंग बट द कंपनी कोड. Global Bike Group US, Global Bike Group Germany, this is nothing but the company code, which is the country specific segregation. Country specific segregation of this particular entity. अच्छा, अब इसी ग्लोबल बाइक ग्रुप को जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, इसको मैंने डिफरेंट वे में कैटेगराइज कर दिया. जैसे कि यूएस के अंदर डैलस टेक्सास है, मायामी फ्लोरिडा है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया है. Similarly, in Germany, there are like this company in Germany, it operates in two different geolocations, Hamburg and Heidelberg. And अगर US की बात करें तो this company in US, it particularly operates in three different locations. One is the Dallas, Texas. Another one is the Miami, Florida. Another one is the San Diego, California. Okay. So तीन ये locations हो गई और दो ये locations हो गई इस particular case के अंदर, which is the personal area. Okay. Now when I talk about the personal sub area part of it, तो डैलस के अंदर आई एम सेइंग, टेक्सास के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी का जो यूएस एंटिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दे हैव एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, दे हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे हैव एचआर डिपार्टमेंट, दे हैव आईटी डिपार्टमेंट, दे हैव मटेरियल मैनेजमेंट, दे हैव परचेजिंग एंड प्रोडक्शन. सिमिलरली अगर यूएस के अंदर ही मैं मायामी की बात करूं तो सिर्फ उनके तीन ही डिपार्टमेंट वहां पे ऑपरेट करते हैं. एंड अगेन इट डिपेंड्स, अगेन कौन सी कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है. सो यू हैव टू क्रिएट इट इन एसएपी कि ठीक है, अगर मायामी है, लेट्स से जैसे अगर मेरे को इस कंपनी का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो लेट्स से अगर मायामी है तो मायामी के अंदर मैं सिर्फ सेल्स, परचेजिंग एंड एमएमए क्रिएट करूँ. वेरएज़ अगर डैलस आ रहा है तो डैलस के अंदर मैं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट सब पर्सनल सब एरिया क्रिएट कर लूँ. अगर सैन डिएगो आ रहा है तो उसके अंदर सिर्फ सेल्स और एमएमई क्रिएट करेंगे. यहाँ पे जैसे सेल्स, परचेजिंग, एमएम, एंड देन यहाँ पे ऐसा है. इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट देयर कुड बी द थर्ड जियो कंट्री लोकेशन फॉर दिस कंपनी. तो अगेन उसके लिए भी पूरा के पूरा किया जा सकता है. कंट्रोलिंग एरिया, इट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पार्ट. आई विल शो यू अगेन in another slide of the controlling area thing. One second. This one could be more understandable. Okay, so I'm enlarging this one. Is this visible? Yes.
ओके, जैसे कि देखो इस केस में मैंने एक एग्जांपल लिया रिलायंस ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं। तो रिलायंस ग्रुप के दो फर्म्स है, एक क्या है पेट्रोकेमिकल्स और एक है रिलायंस जियो। एवरीवन एवरीवन नोज राइट। पेट्रोकेमिकल्स क्या करते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट या रिलायंस पेट्रोलियम हो गया या फिर उनके जो अलग अलग पेट्रोल पंप्स हो गए या फिर सर्विसेज हो गई। नाउ लेट्स से आई एम सेइंग दैट रिलायंस पेट्रोकेमिकल का जो डिवीजन है इट्स बेस्ड आउट इन इंडिया एंड इट्स बेस्ड आउट इन रशिया एज वेल। बट रिलायंस जियो का जो है वो सिर्फ इंडिया में ही है। सॉरी, रिलायंस जियो का जो है वो सिर्फ इंडिया में ही है। सो दिस इज नथिंग बट द कंपनी कोड। यहाँ पे ये मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द कंपनी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही क्लाइंट के अंदर ये अलग अलग कंपनी आ रही है और फिर इसके अंदर ये अलग अलग कंपनी कोड आ रहे हैं, विच इज नथिंग बट द कंट्री स्पेसिफिक सेग्रीगेशन। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने दो कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट कर दिए जिसका नाम था 40 RE। आई एम सेइंग दैट दिस इज फॉर इंडिया, इंडियन रुपीस, एंड देन आई एम सेइंग दैट 40 RU दिस इज फॉर रशिया। तो मैं यूं कह रहा हूँ कि ये जो कंट्रोलिंग एरिया 40 RE है, मैं इसको रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स इंडिया को असाइन कर दूंगा एंड रिलायंस जियो इंडिया को असाइन कर दूंगा। वेरेज यहाँ पे जो दूसरा वाला है दैट इज 40 RU, इसको मैं रिलायंस पी रशिया को असाइन कर दूंगा क्योंकि इसकी जो कंट्रोलिंग एरिया की डॉलर टर्म्स है वो है रशियन रूबल्स में और इसकी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीस के अंदर। वही चीज फिर मैंने यहाँ पे आगे जाके सेग्रीगेट की कि अगर मैं पेट्रोकेमिकल्स की बात कर रहा हूँ, लेट्स लीव रशिया फॉर नाउ असाइड फॉर नाउ बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिक, लेट्स लीव रशिया असाइड। सो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडिया के दो डिविजन्स हैं, दो पर्सनल एरिया है, एक महाराष्ट्र के अंदर है एक गुजरात के अंदर है। नाउ इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि गुजरात के अंदर उनकी सारी रिफाइनरी चलती है, क्वालिटी टेस्टिंग चलती है एंड देन दे हैव देयर डेडिकेटेड HR टीम बेस्ड आउट ऑफ गुजरात ओनली। बट महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में आई एम सेइंग दैट दे हैव फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, दे हैव सेल्स डिपार्टमेंट, दे हैव जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओवर देयर इन महाराष्ट्र। Okay, like again, this company petroleum industry generally functions very differently. They have to have a geological department जो सारा के सारा सर्वे करते रहते हैं और like कि कहाँ पे पेट्रोलियम प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा और like what is the refining strategy या फिर वो सारा चीज़ें। Whereas Reliance Jio is working, whereas Reliance Jio works very differently, right? Reliance Jio के केस में मैं फिर से कह रहा हूँ कि it's based out in Maharashtra, it's again based out in Karnataka. They have finance department, sales department, HR department, and Reliance Jio Karnataka के पास में है। They don't have they don't have sales department, but Karnataka के अंदर they have finance department, HR department, and inventory department. So this is how we will map the entire thing in SAP. Okay. Now can you get much more better idea about it? ये presentation में share कर दूँगा. Yes, sir. Okay. So this is the Yeah, now it is more clear. entire, मतलब this is a more realistic example of like ठीक है कि अगर एक कोई इंडस्ट्री लें उसको समझें तोड़ के कि किस तरीके से वो फंक्शन कर सकती है। In this is again not a complete real time scenario. In a complete real time scenario, you can have like hundreds of these only, and then you can have in a thousands of these. Okay, so that's why in a real time scenario, SAP system is a very big, इतना बड़ा हो जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैप करना अगर कोई MNC कंपनी आ जाती है कि दे एक्चुअली नीड लॉट ऑफ द पीपल टू सपोर्ट इट कि कोई चीज़ें मेस्ड अप नहीं हो। दैट मेक्स इट वेरी वेरी, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इट एक्चुअली, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स कि सीखा नहीं जा सके। इट्स लाइक मोर यू प्रैक्टिस एंड मोर यू विल गेट यूज्ड टू इट। Okay, so this is all about the enterprise structure. ठीक है, now let's talk about the employee structure. There is a thing in SAP which is generally known as the employee structure. एक बुक में शेयर करूंगा इस स्ट्रक्चर के लिए, उसके अंदर तीनों के तीनों स्ट्रक्चर मेंशन किए हुए होंगे, चारों के चारों, so that you guys can grab it very very quickly with a real time examples. Sir, can you please share syllabus also? Sure. Thank you. Yeah. So employee structure. देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को भी कैटेगराइज किया जाता है। किस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है आप पूछोगे?
कोई मेरे को बता सकता है किस बेसिस पे एम्प्लॉइज को कैटेगराइज कर सकते हैं? और According to department grade. हाँ, डिपार्टमेंट ग्रेड हो गया, चलो ठीक है, पर ये डिपार्टमेंट और ग्रेड तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ना। ग्रेड यहाँ पे नहीं है, ग्रेड इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ पेरोल स्ट्रक्चर, बट या ओके, सो यू बेसिकली कैन, Location. yeah, location is another aspect of it, but again here I'm defining the locations, right? ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात and all those things. Okay, there is another categorization. ये सारा categorization तो होता ही है, but there is another categorization. कौन सा एम्प्लॉई आवरली काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉई सैलराइड काम करेगा, करेक्ट? कौन सा एम्प्लॉई ट्रेनी होगा, कौन सा एम्प्लॉई इंटर्न होगा, कौन सा एम्प्लॉई रिटायरी एम्प्लॉई होगा, और कौन सा एम्प्लॉय टर्मिनेटेड एम्प्लॉय होगा, करेक्ट? होता है ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, Yes. राइट? सो देखो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है जनरली एसएपी की टर्म्स में। एम्प्लॉय स्ट्रक्चर इज बेसिकली ऑफ टू एस्पेक्ट्स, एक्टिव एम्प्लॉयज see much more we can categorize it like this, that okay, employee grouping, employee groups, एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स के अंदर आते हैं अलग अलग तरीके के सब ग्रुप्स। You have employee groups, and in employee groups you have employee subgroups. अब आप पूछोगे कि एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या है? सो सी, दिस इज अगेन द डिफरेंट और टू टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशंस दैट यू कैन डू इट इन एसएपी। लेट्स से मैं अगर डिफाइन करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी अगर डिफाइन करना चाहती है कि लेट्स हैव परमानेंट एम्प्लॉइज, देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज। ओके, मैं यूं कह रहा हूं कि मेरे पास दो कैटेगराइजेशन होना चाहिए, एक परमानेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी मैं कह रहा हूं कि परमानेंट में भी आवरली सैलराइड ट्रेनी होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट में भी आवरली सैलराइड ट्रेनी होना चाहिए। कैन यू गेट दिस पार्ट? Yes. सो एम्प्लॉय ग्रुप्स तो मैंने असाइन कर दिया, अब मुझे जब सब ग्रुप्स बनाने हैं तो मैं यूं कह रहा हूं कि भाई सब ग्रुप क्या होगा, परमानेंट एम्प्लॉइज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हर सिस्टम के अंदर, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। कभी कभी क्लाइंट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है बेस्ड ऑन टू द कंट्री लॉ, कि जैसे अब यूएस में है, यूएस में जनरली दे क्रिएट लाइक यूनियन एम्प्लॉइज एंड देन यू हैव नॉन यूनियन एम्प्लॉइज, है ना? तो ये ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट में इसी तरह का सेग्रीगेशन देखने मिले कि भाई परमानेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है। बट हाँ, ये आपको जरूर देखने मिलेगा कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर चीज जो है वो एम्प्लॉय ग्रुप है और एक फिर सब ग्रुप है जिसके अंदर सारा के सारा आवरली सैलरीड वगैरह वो टर्म्स डिफाइन किया गया है। Okay, so like either ways it could be like that. There could also be the third way of doing it. मतलब it depends from a company to company कि भाई उनको किस तरीके से implementation करवाना है उनके business के हिसाब से। So permanent employees. So in permanent employees, I am again saying over here subgroups क्या होगा? Subgroup I am saying again salaried employees. And then you have hourly employees, and then you have trainees। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाल दिया।
Now, similar categorization you want to create it for contract as well. But in contract, अब client की requirement मान लो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि contract में हमको trainees hire ही नहीं करने हैं, तो आप उसको implement ही मत करो. वो यूँ कह रहे हैं कि contract employees को सिर्फ दो ही तरह का categorization दो. One is the salaried employees and one is the hourly employees. ओके सो सी इन अ सिंपल टर्म्स, अब देखो इन अ सिंपल टर्म्स में क्या कह सकता हूं. एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या है मेरे एम्प्लॉय ग्रुप्स. लेट्स से इंडिया परमानेंट एम्प्लॉइज. ओ लेट्स से परमानेंट एम्प्लॉइज and now you have here as contract employees. This I'm highlighting it and this I'm saying it as this I'm marking it in as let's say green. These are my employee groups. And what are my employee subgroups? What are my employee subgroups? My employee subgroups are as such that okay, I'm saying permanent salaried employees. Next one, permanent hourly employees. Next one, permanent trainee employees. How can I define it in the contractual terms? We can say permanent, sorry, contract salaried employees, and here I can say contract hourly employees. Any doubt? Okay, let me complete it. Okay, and let's bring the arrow over here. So ये अपने permanent employees के लिए हो गया. और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए हो गया. सो दो तरह के एम्प्लॉय ग्रुप्स मैंने डिफाइन किए हैं कि है परमानेंट एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड अनदर वन इज द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ग्रुप्स. परमानेंट के अंदर फिर मैंने बाइफर्केशन कर दिया कि सैलरीड है, आवरली है, ट्रेनी है. और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर से मैंने बाइफर्केशन कर दिया कि सैलरीड है और आवरली है. सो दिस इज हाउ जनरली द एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड. अच्छा, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय स्ट्रक्चर अभी आप सिस्टम में भी देखोगे, सिस्टम में और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है. आई कैन असाइन, अच्छा जरूरी नहीं है कि मुझे ये किसी कंट्री के लिए क्रिएट करना पड़े. आई कैन हैव इट क्रिएटेड फॉर मल्टीपल कंट्रीज. मतलब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इंडिया के लिए भी यही रहे, यूएस के लिए भी यही रहे, ब्राजील के लिए भी, सॉरी यूएस अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे अपन ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहे हैं. ओके, इंडिया के लिए भी यही रहे, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही रहे, ब्राजील के लिए भी यही रहे, या फिर अपना जो है फ्रांस के लिए भी यही रहे. ओके, बट मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में इस चीज को वो कुछ अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हटा के मैं ये एम्प्लॉय ग्रुप और सब ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग से क्रिएट कर सकता हूँ. ये चीज समझ में आई किसी को?
Yes, sir. Got it. गॉट इट? लाइक जैसे कि मान लो कि ये मैंने इंडिया, ब्राजील और फ्रांस के केस में ऐसे कर दिया, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने इस चीज को एज ए यूनियन डिफाइन कर दिया। मैं परमानेंट की जगह वहां पे यूनियन ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि ठीक है मैं वहां पे दो तरह का कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, वन इज अ यूनियन, अनदर वन इज अ नॉन यूनियन। वन इज अ यूनियन, अनदर वन इज द नॉन यूनियन। सो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी यूनियन एम्प्लॉइज, this will again be union employees, and this will again be union employees, and what will this be? ये क्या होगा? क्या लिखूं यहाँ पे मैं? Non-union salary. करेक्ट, नॉन यूनियन सैलरी। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूं? ट्रस्ट मी, एक बार ये वाली चीज आ जाएगी ना समझ में, तो इट्स वेरी इजी। जैसे लाइफ सिस्टम होता है, तो लाइफ सिस्टम को रीड करना बहुत इजी हो जाएगा कि हाँ ये इस तरह का कैटेगराइजेशन चल रहा है यहाँ पे, एंड ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कॉन्फ़िगर करनी है। होता यूं है कभी कभी आपको, जैसे कि ठीक है, अगर कोई एक एम्प्लॉई है, अगर वो एम्प्लॉई सिर्फ यूनियन सैलराइड को बिलोंग करता है एक एग्जाम्पल के तौर पे, एंड अगर आपको क्लाइंट ये कहता है कि मेरे को जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो इसी चीज़ के लिए करनी है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसके लिए भी चेंज हो जाए, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग फॉर ग्रुपिंग कि हाँ भाई मेरे को सिर्फ यूनियन सैलरीड के लिए करनी है, सो लेट्स टेक केयर ऑफ इट कि मैं खाली यूनियन सैलरीड के लिए करूँ, बाकी चीज़ें अफेक्ट नहीं हो जाए। सो आई एम सेइंग दैट दिस इज इन द केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड देन सॉरी या दिस ओवर हियर। So here we are defining this is in the case of Australia, and the rest is the case of India, Brazil, and France. Okay, so this is how typically you generally can create the employee structure, and this is how typically generally you can create the enterprise structure in a company. Now there's a book that I wanted to give you guys. This book generally has a very good idea about what uh, मतलब और किस किस तरह के सिनेरियोज आप जनरली देख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द, one second, let me see where it is available. So this is a book which is generally provided by SAP only. SAP से ही, SAP प्रेस रिलीज से ही डाउनलोडेबल है ये। Generally don't share it actually with anyone because this is ideally a confidential document by SAP only, मतलब the copyrights and everything are very much reserved. And as far as in the case of SAP, it's not actually open source, मतलब कहीं पे भी अगर आप ये book लेने जाओगे तो it's not gonna be open source in any case. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, एंड ईदर वेज अगर मतलब कहीं पे शेयर भी करोगे तो until and unless you are not going through the classes or the recordings, it's very sometimes it's difficult to understand, but yeah, let's open it up. So what you need to cover, you need to cover जो आज हमने डिस्कस किया है is this part, human capital management structures. ओके, let me see कि in between अगर आता है कि नहीं आता है।
And guys, there are 4 books of SAP that I will provide you. अच्छा, घबरा मत जाना कि 360 पेजेस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रट्टा मारना है या पढ़ना है या वो करना है. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एक्चुअली इन द पिक्चर फॉर्मेट, मतलब पिक्चराइज्ड फॉर्मेट में चीज़ें ज़्यादा हैं, थ्योरी कम है, बहुत ही मतलब रेलेवेंट है. और कुछ चीज़ें मतलब पूरी तरीके से अवॉइड भी की जा सकती हैं, बस खाली थोड़ा पिक्चर्स और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लेसन्स पे आप थोड़ा फोकस अपना ज़्यादा रखना. लेट्स सी व्हाट इज द पेज नंबर. 133. So this part, yeah. So see, this is how generally the enterprise structure looks like. ठीक है, कि enterprise structure के अंदर you then have a company code, in a company को in client company code के अंदर personal area, and personal area के बाद में personal sub area, enterprise structure. And then you have the different definitions of what actually is client. मतलब again you can follow this definition, but like generally you can also say client is an highest independent entity in an organization. What is a company code? Company code is nothing but more like a country specific segregation. Now normally companies के अंदर ऐसे ही रहता है. Personal area is nothing but more like a different different geolocations among different company codes, and personal sub area is nothing but different departments of that company code. And again they have explained it in detail कि client क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, and then they also have covered onto the controlling area over here. But I've given you the more nuanced definition कि क्या होना चाहिए उसका. And then you have the employee structure. It is also known as personal structure, employee groups and subgroup, the relationship between employee and the company, and then employee groups. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि employee groups किस तरह के हो सकते हैं. तो देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इज लाइक एन एक्सटर्नल एम्प्लॉय हो सकता है, एक्टिव एम्प्लॉय हो सकता है, और एक कैटेगरी अलग से क्रिएट की जा सकती है रिटायरीज के लिए. ठीक है ना. अभी इसी को सब ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करें, तो सब ग्रुप के अंदर एक तरीका हो गया कि नॉन पे स्केल एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया, ट्रेनी अलग से क्रिएट कर दिया, एक्टिव एम्प्लॉय के अंदर ही आवरली बेस्ड अर्नर्स अलग से क्रिएट कर दिए, सैलरीड बेस्ड अर्नर्स अलग से क्रिएट कर दिए. ओके, सो दिस लेसन बेसिकली यू जनरली हैव टू गो थ्रू. यहाँ पे ये एक और चीज दिखाई गई है कि जब भी मैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, जनरली ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ मैं इंडिया के लिए अलग करूंगा या ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग करूंगा या फिर हर एक कंट्री के लिए अलग करूंगा. अगर मैं चाहूँ तो एक ही एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को चारों कंट्रीज को भी असाइन कर सकता हूँ. अगर मैं चाहूँ तो हर एक कंट्रीज के लिए अलग अलग भी क्रिएट कर सकता हूँ, या एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को मैं 3 कंट्री को असाइन कर दूँ या एक के लिए अलग से कर दूँ. इट डिपेंड्स फ्रॉम माई क्लाइंट कि मेरा क्लाइंट क्या चाह रहा है, मेरी एबीसी इंटरनेशनल जो भी कंपनी है वो क्या चाह रही है, उनको क्या करवाना है, उनको किस तरीके का एम्प्लॉय कैटेगराइजेशन करना है, based much much like that. Okay, so this book I will share with you guys. Any doubt in today's session? We'll see the Yes, sir. configuration Yes. of this in the next lecture. Okay, sir. Thank you. We'll see कि इस पूरे के पूरे चीज को SAP पे कैसे मैप करना है in the next lecture. Okay, I'll share this book by the way. Go with those chapters which I am referring to. Okay, and syllabus I will provide you by the weekend. I thought like you must be having it, but I'll provide you by the weekend. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.